between the Pakistani and the Chinese, I'd prefer to fight the Chinese than the Pakistani. You actually fought against Chinese equipment with people who can handle this Chinese equipment better than the Chinese. The Chinese don't know how to handle all this in fighting. Pakistani is good at fighting because his system is poor. He had to go to China. He had no choice. Against the Chinese, if that starts happening, it will happen. Because no one will want to buy junk from China. China, the important thing is not fighting. Its important thing is face. 巴基斯坦那边公布了几张卫星照片，说是他们用中国的枭龙战机直接把印度的 S-400 防空导弹系统给干掉了。S-400啊，那可是俄罗斯的宝贝疙瘩，号称防空王牌。结果呢，被中国的枭龙给一锅端了。这下印度可傻眼了。之前呢还死鸭子嘴硬，说巴基斯坦造谣，结果照片一出来，直接就哑巴了。集体装死，你说丢人不丢人？这事可不简单。这不光是中国武器第一次跟这个俄罗斯的王牌硬碰硬，而且还把这个印度那些高价买来的洋玩意儿的毛病给扒了个精光。更搞笑的是，这印度有个退役老将，居然说宁愿跟解放军打，也不要跟巴基斯坦打。你说这脑回路是不是有问题啊？Hello， 大家好，我是小懒，马上就开始我们今天的节目啦。巴基斯坦的黎明报爆料说，他们的枭龙 Block 3战机挂着中国的 CM400 AKG 导弹，直接突袭了印度的乌丹布尔基地。卫星照片也证实了 S-400 的发射车都被炸成了废铁。这 CM400 AKG 导弹那可是高超音速导弹那速度快的跟闪电一样嗖的一下就过去了。结果呢，印度的 S-400 全程没反应，眼睁睁看着自己被炸。更讽刺的是 S-400 的残骸还在那冒烟呢，印度军方就急着让网民别信谣言。但是巴基斯坦公布的卫星图坐标了啥了都是标的清清楚楚印度根本就没法反驳。印度总理莫迪在电视讲话里故意不提阵风战机被击落的糗事，反而吹嘘他们搞了个驻沙行动，取得了完胜。भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। चीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम को, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी। 但是这个战损数据一出来，这谎言就被戳穿了呀。巴基斯坦用歼10C 啥的击落了5架印度战机，其中3架还是单价2.4亿美元的阵风，而自己呢，那1架都没损失。印度发射了100多枚布拉莫斯导弹，结果被中国的红旗9B 电子干扰，只有20%左右的命中率，炸了巴基斯坦的5座军事基地，还说打死了巴基斯坦1个空军中队长和4个士兵。这场空战是2种军事发展路子的较量，印度是砸钱买，体系建设跟不上，就是花架子一个。S-400 号称多厉害还不是照样被炸了。但是巴基斯坦聪明着呢，跟中国研发枭龙 Block 3，配上歼10C，构建非对称优势。这是啥？花小钱办大事用1/10的成本就能跟印度抗衡。中国的出口型防空系统第一次实战就创下了拦截率的记录。而印度花了78亿美元买的 S-400， 连自己都保不住，难怪巴基斯坦的外长达尔敢在这个 CNN 放话，说无需动用核武器，凭借常规军事力量就足以击败对手。可见中国制造的武器已经构建起了立体的防御网，只是巴基斯坦财力有限，没买够数量而已。话说孟加拉国看了这个印巴交好要购买咱的歼10C战机了，হঠাৎ কেনই বা J-10C কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ? চীনের তৈরি যুদ্ধবিমান J-10C এর মাধ্যমে ভারতের হামলার মোক্ষম জবাব দিয়েছে বলে খবর হয়েছে। মূলত J-10C দিয়ে ফ্রান্সের তৈরি ভারতীয় রাফাল যুদ্ধবিমান, এখন চীনের তৈরি সেই যুদ্ধবিমানই এবার কিনতে চায় বাংলাদেশ।
বছরের শুরুতে ডিফেন্স সিকিউরিটি এশিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয় বাংলাদেশ চীনের জেটেন্সি মাল্টিরোল যুদ্ধ বিমান ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তানের পর দ্বিতীয় দেশ হিসেবে এই আধুনিক প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারী হতে চলেছে বাংলাদেশ। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ বিমান বাহিনী BAF 16টি জেটেন্সি যুদ্ধ বিমান কেনার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিচ্ছে, যা পুরনো চীনা নির্মিত F7 কথায় এই জেটেন্সি ক্রয় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।不得不说啊，你看这广告效应真的是立竿见影啊！但是啊，这战争的剧情啊，那总会在最后关头给你来个大反转。本来这印巴冲突，大家都以为巴基斯坦这次要赢麻了，结果你猜怎么着？就在停火协议生效前的30分钟啊，这个印度突然不讲武德，嗖一顿导弹招呼过去，给巴基斯坦来了个措手不及。停火协议生效前30分钟，印度突然发射导弹，精准命中巴基斯坦努尔汗空军基地。卫星画面里，基地跑到浓烟升腾，可战机却看是完好无损。正当外界以为巴铁逃过一劫时，噩耗传来，5名巴空军飞行员不幸丧生，其中还包括1名枭龙战机中队长。印度的那个空军中将巴蒂开新闻发布会的时候啊，那个嘚瑟哦，说击落了数架巴基斯坦的战机，但就是不说具体的数字，还阴阳怪气的说我们只管打中目标，才懒得去数数呢，让巴基斯坦自己去数吧。哎喂，这话说的啊，真够损的。其实啊，他就是想掩盖自己空战打得有多惨。印度这种在停火前搞偷袭的做法，虽然是不违反国际法，但是太 low 了。这说白了就是输不起。印巴冲突谁输谁赢啊，全球是看得清清楚楚。但是面对各种报道啊，这个贾康姐就纳闷了，为什么全球的媒体都不相信是印度战胜了巴基斯坦呢？ Pakistani air defenses are smoldering. 哎，你他娘的还真是个天才！更夸张的是，那个印度退役中将尚卡尔的神论，更是暴露出了印度军队的深层危机。他居然说巴基斯坦比解放军更会用中国武器，还说宁愿跟这个解放军打，也不跟巴基斯坦打。他是不是忘了啊？这个枭龙战机的火控系统、CM400的制导算法都是中国军方提供的。巴基斯坦把歼10C、猎鹰80、寂静狩猎者、054护卫舰这些装备组合起来，形成了体系战力。这可不是简单的领土争议，而是军工体系的对抗。这印度老将的逻辑啊，简直就是一团浆糊啊！他是不是以为解放军没实战经验，就比巴基斯坦好对付？难道他不知道巴基斯坦用的中国装备只是我们的二流货吗？我真不知道他是哪来的自信啊！另一方面啊，也说明了印度军队的体系化缺陷。他们买的美国 M777 榴弹炮还能用骆驼运输，韩国的 K9 自行火炮在高原故障率超过40%。现在连号称世界最强防空的 S400都成了活靶子。难道说美国、俄罗斯、韩国卖给印度的装备被摧毁了，就代表巴基斯坦也能暴揍这些国家吗？这逻辑也太奇葩了吧！再看看美国的态度，空战前，美国就禁止巴基斯坦使用 F-16参战，却对印度发射风暴阴影巡航导弹视而不见。这种双标，一方面就是害怕美制战机被击落丢脸，另一方面反而加速了巴基斯坦全面使用中国武器的决心。U.S. Navy fighter jet lost at sea from the aircraft carrier USS Truman. The aviators had to eject during a nighttime landing on the deck of the carrier. Chief White House correspondent Mary Bruce has the latest. And Mary, we know this comes after a $70 million fighter jet went overboard in the Red Sea, just last week, Mary. 更微妙的是俄罗斯的态度，克里姆林宫至今没对 S400背回表态。但是俄罗斯军事论坛已经炸锅了，都在说中国导弹摧毁了我们最骄傲的出口产品。可见啊，这场武器贸易暗战正在改写规则。这法国阵风战机被击落，导致达索公司的股价暴跌，而中国接到的枭龙订单未来将会激增数倍啊！不过印巴长期谈判还没完成，因为最关键的水资源共享条约还处于暂停状态。这巴基斯坦外长达尔5月12号就对这个美国的 CNN 表示，印度单方面终止印度河用水
非条约是战争行为，暗示着未来印巴冲突可能会从天空转向为水利设施。这可是养活巴基斯坦2.4亿人的命脉系统，这如果遭到封锁和破坏，这杀伤力远超这次的短暂空战。这达尔还警告说，在未来的印巴谈判中，如果水资源问题得不到解决，那么这次的停火协议将会受到威胁。真到了那一天，很可能将会再次引发双方的军事冲突。但是巴基斯坦显然不会惧怕印度，懂的都懂。目前中印巴三角关系正在经历深层重构。中国防务输出创造的不仅是武器代差，更培育出了中械加本土化的防御范式。而引入万国牌装备带来的问题则更加致命。这智能化战争的雏形在这次冲突中也显露狰狞。印度发射的风暴鹰鹰导弹被干扰后坠入阿富汗境内，揭示出未来战场电子对抗的核心地位。当莫迪吹嘘行动圆满成功，却对阵风坠毁避而不谈时，实战检验出的真理愈发清晰。没有自主国防工业的军队注定在高端对抗中沦为配角。此刻克什米尔的暂时停火不过是南亚战略冲突的短暂喘息，下一次引爆点或许就在这个印度河畔的水闸控制室。好了，今天就聊到这里，觉得不错呢，欢迎订阅、点赞、分享哦。我是小兰，感谢您的支持，我们下期见，感谢。